No, sir. No, sir. Okay, fine. We are actually just waiting for a couple of minutes. At 7:35, we'll be starting our session. It's just because this is the Okay. first demo session, so people may be joining. Okay. 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 Yeah. Okay, I guess we can start now. I hope I'm audible to everyone. Uh, People who are there, can you please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Audible. Thank you. Thank you for the Yes, you are confirmation. audible. Thank you. Very good evening to everyone, and thanks for your reply. Now, today we Good are evening. actually gathered over here for understanding what exactly this data analytical session or this data analytical course is going to be with us, and what an impactful thought that will be giving us to, isn't it? So, for our best career, or let's say, what will be a key role that will be as an knowledge we'll be getting over here for our pursuing dream job over here. So yes, we are going to look over there step by step, and everything will be discovered over here. Before that, I'll just request every one of you over here, whoever is joining over here, okay, to our demo session. I request you everyone to please look off your, let's say, have an observation over your mic. If by any chance you have any query, make sure you can open it. You can talk within your mic, no issue with that. But if you are joining and if you are having a discussion over your surrounding, or let's say beside you, make sure your mic is off. Okay, otherwise it may be a bit of disturbance to others also. So we just have to avoid it. Okay. So that's the first request. And other thing is that let me first conclude with my presentation. And whenever I will ask any query, you can please uh, uh, put it on your mic and you can have with that. Okay, it's okay. You can open your mic, no issue with that. But until unless I complete the PPT or that particular representation or that instant of that presentation, make sure hold on your questions, because then again we will have to continue. Okay, so once we will complete step by step process, I will sure make that I'll be asking you questions. I'll be having your concerns. I'll try to clarify it on that particular spot only. And once we will get throughout the uh, process, or let's say throughout this demo session, at the end, towards 10 to 15 minutes will be specifically given to you and you only, all the people who are over here, to get the knowledge, or let's say to clarify your queries regarding placement, regarding training, regarding duration, and all things. Okay, so let us begin. Thank you, first of all, everyone, to take out your important and very scheduled time from where you have taken uh, time perspective time where you will be investing this particular important session, and knowing this particular things, that what exactly a data analyst role is in an IT field, and why it has been booming, and why this could be a lucrative job opportunity for you. Okay, so thank you for all to being participant over here. Okay, introducing myself. My name is Deepak Bhatlavande. I'm over here as a mentor who will be teaching you, who will be guiding you, who will be taking you throughout this all courses that I will be providing with all details. So I'm a data scientist who has worked from 2013. To be frankly, if I have to break it down, I'll just break it down in a particular year wise. So it will be good for everyone. So from 2013, I got passed out in automobile field. I'm not an
IT, or let's say anyone who is from technical field of let's say computer science, and in that case, so it's not like that. Yes, technically it's a technical field only, it's not something non-technical, but anyhow I was not in computer science or in a coding language background. From there, from 2013 to 2018, I did worked, or I did done my job, my career in different domains. I worked in insurance company, I worked in pharmaceutical company also. So there were different challenges that I have faced, manufacturing and services. But after that, from 2018, I did understood something about computer, where let's say not computer, but about language and something about a data, which has been happening right now. You can see data scientist, data science, analyst, data engineer, AI has been all talking over there. So it was there that I got an opportunity to understand what exactly has been going. So at that time, data was being generated and was working on a huge scale. People were fetching all type of data which is available. From there, I got, let's say, insecure about my knowledge, and people, let's say my friend around there was having this particular theory about this data. So they pursued with me. I just took the knowledge about that. And from there, I started to get involved, where I joined one of a company, which is Breath India Company Technology, where they are working basically with pharmaceutical companies. They're having different projects, which used to be work with pharmaceutical companies, specifically from, you might have heard, Serum Company. Okay, Serum is one of a huge company which is working on pharmaceutical, vaccine, and all those details. So I did work with them also. After that, I also worked with different companies, where I got knowledge about from 2000 means 2013 to 18. I was basically working like this, and then past 4 to 5 years, I did work with a different company, which is again I shifted my gear towards other company, where I have worked as a data scientist, where I have worked on different domains, different projects, healthcare, manufacturing, inventory management, and so on, so forth. So basically, why I'm saying all these things, because you should be knowing that who is the person. Does he really has that caliber, or does he has that much of knowledge? Again, it's something what I'm telling you. There is no documentation about it to show you, but that's fine. Okay, you'll be getting it in proper details, that what particular topics and what particular curriculum we will have with this. Okay, so basically now here we'll be understanding what exactly as a data analytics you will be getting in the world, what knowledge you'll be gaining from here, from Arbor basically. This course is basically provided, is given and emphasized by Arbor Academy. This Arbor Academy is specialized in IT training institutes, where different courses are placed, and from there one of a course which is a data analytics integration with the power, we are be studying with tools Power BI, Excel, SQL, and Python. So these are the tools that we'll be integrating, we'll be understanding, and we'll be using this in a let's say scenario based manner. Basically, theoretical part, it's okay. Theory is something which can be studied, which can be gained, which can be taken from anywhere outside this domain. But the thing is, whenever you have a theory, you need to understand where you need to practically implement it. Okay, practical implement it. So we will be focusing on not only give you the theory knowledge, but this theory knowledge, how to implement as a practical scenario, let's say practically in any field wherever you are focusing on. So that is our motto over here. So this is what we are focusing on. Now you must be knowing that data is being generated everywhere. It's not something I'm specifically saying to a specific domain or any particular region or any particular industry. It is all over now. From 2019 specifically, if I had to say, after the COVID, okay, after this COVID, which has been drastically changed over geographical environment, you have seen that this 2019, from there, there's a huge amount of, there's a huge spur of data around around this let's say region, over the globe. It has been available, where every domain, not only from pharmaceutical domain, not only from manufacturing domain, even from retail sectors. Retail sectors means specifically, you must be knowing that.
In earlier days, we don't have, or we haven't seen anyone having a computer or laptop in front of a desk where you used to take orders from your clients, isn't it? So it was not there. But recently, from 10 to 15, and let's say 10 years around, if you'll go back towards here, you will see that nowadays we have that facility. Earlier, a small kirana shop is now been transferred into marts, small marts, mega marts, D mart. There are lots of let's say innovations which have been done. Now, how it has been there? हुआ कैसे ये? How it been there at this position now? It is all because of this data. Presence of data which was there, people understood that. They gradually they took all those information within them. They understand the meaningful insight within it. The data was having inside the information which is deep hidden in it, but normal people, let's say general people, were not aware of it. Then they used their knowledge to find out some pattern, some seasonality, some trend in that, and they then took a leap over here, which should be taken from us or should have been taken from every person over here. But now they are been gradually increasing themselves towards a different level. Why? Because of data over here. Everything is coming from data only, everything. And whenever you have a huge data, there is a huge amount of um, problems that will be associated with it. Okay, so data which has been generated will not be a clean way. Clean means there could be redundancy, there could be duplicate data, there could be unwanted information, there could be unwanted data being stored in a particular database, there could be misleading informations. If you are going to be a data analyst, if you are focusing to be a data analyst, you have to go through this process. You have to go through this process. You cannot simply ignore it. You cannot avoid it. This is your bread and butter. If you have to get this knowledge, and in practical scenario, if you'll ask me how much percentage or how much time do we have to indulge within it, I can simply say that 80% of your total work, 80% from 100%, 80% of your total work is only and only work with this data pre-processing process only. This is where we come in a picture. Okay, this is okay. Again, I'll request everyone to please make sure your mic is been off. Okay, whenever you want, you can have that question, but make sure otherwise you have to keep that off mic. Okay. Now, before starting it, let us get a good motivation over here. Now remember that today, as we all are gathered over here, isn't it? Again, हम में से बहुत सारे शायद इंग्लिश, मराठी, हिंदी इनको समझने के लिए थोड़ा सा इशू होगा, but fine, okay, no problem. What I will do is that I will use हिंदी and English side by side. हम दोनों यूज कर सकते हैं ताकि जो भी लोग हैं सबको कम्युनिकेशन में इजी हो, बिकॉज हमारा पूरा फोकस नहीं है कि मैं आपको पूरी इंग्लिश में ही पढ़ाऊँ. आई एम नॉट फोकस इन दैट पर्टिकुलर मैनर. सो हम क्या करेंगे, हिंदी somewhere, if particular person is there who is not able to even understand Hindi, I'll also talk if he'll be able to speak in Marathi. I'll be keeping that also, but in a general way I'll be speaking Hindi and English. Okay, so अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम सब जो यहाँ पे जमा हुए हैं या फिर हम सब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका रीजन एक है. हमें पता है कि बाहर मार्केट में ये जो जॉब है, ये पर्टिकुलर जो हम अभी सीख रहे हैं टॉपिक, डेटा एनालिस्ट करके जो अपना जॉब रोल है, इसको अच्छा खासा डिमांड है मार्केट में. बिकॉज एक सर्टेन पीरियड स्पेसिफिकली 2019 के बाद में अच्छा खासा बूम हुआ है डेटा का मार्केट में. और उस डेटा में क्या है, बहुत सारे छुपी चीजें है, बहुत सारे छुपे हुए इनसाइट है, इंफॉर्मेशन है जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं. और जो भी कोई रिवील करके देता है तो उसे मार्केट में अच्छा उसको पेमेंट है या फिर उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. आपने भी रिसर्च किया है, मैंने भी रिसर्च किया है. सो बेस्ड ऑन दैट, आपने आज इतना टाइम निकाला है, उसके लिए क्या है कि हम एक स्टार्टिंग के लिए इतना सा ध्यान रखेंगे. आज के लिए आपको ये एक छोटा सा स्टेप लग रहा है, विच इज रिटर्न ओवर हियर, आपके सामने दिख रहा है आपको. आज के लिए आपको एक छोटा सा स्टेप लग रहा है, लेकिन यही स्टेप आगे जाके कुछ टाइम के बाद में एक बड़ा आपको जंप लगेगा. ओके, सो मेक श्योर यूज इट वाइजली. नाउ, जैसे हमको कहा कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी आर डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, हम डेटा के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा क्या ही रीजन हो गया. ऐसे बहुत सारे दूसरे भी तो अपॉर्चुनिटीज है. हाँ, डेवॉप्स है,
फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ऐसे बहुत सारे है। ओके, ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ डेटा एनालिस्ट है। बट वाई डेटा? हाँ, स्पेसिफिकली आपको डेटा, इस डेटा एनालिस्ट के बारे में बताऊं ना, तो देर इज वन वे वी कैन से इट्स लो कोड, लो कोड और नो कोड। अच्छा, बहुत लोगों को शायद पता ना हो, पर बहुत सारी कंपनी या फिर बहुत सारे अभी जो इंडस्ट्री है वो फोकस इन दो चीजों पे कर रही है। How we can create, or let's say how we can work in such a way that there should be minimum amount of code or there should not be any code. Now why we are using this or why we are working on this perspective, इसका रीजन एक है। देखो होता क्या है, हर एक बंदा, क्या हर एक इंसान में ना कुछ टैलेंट होता है। ओके, लेकिन हर चीज अगर हम सिर्फ कोडिंग के बेसिस में, हर चीज अगर हम कोडिंग के बेसिस में वर्कआउट करेंगे तो उसमें से हम टैलेंट निकाल नहीं पाएंगे। किसी को कोडिंग आने के बावजूद भी उसके लॉजिक्स, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो नहीं हो पाता है उसके पास से। ओके, जो कहा जाता है ही डज इट वेरी वेल, बट above that it's very difficult for that person also to work on। तो ऐसे केस में क्या किया है कि हाउ टू यूटिलाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेन। तो उन्होंने क्या किया है कि वी शुड लुक फॉर लो कोड और नो कोड। जिनको कोड आता है ठीक है, बट अदर पीपल हु डू नॉट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज ऑन कोडिंग, तो उनके लिए लो कोड और नो कोड के हिसाब से। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप इन अराउंड with the help of AIs now, that you just have to use and you just have to understand what exactly the step has to be followed और आपको वहां पे आंसर आ जाएगा। यही मेथड, यही प्रोसेस डेटा एनालिटिक्स वाले लोग अप्लाई करते हैं, जहां पे वेरी लो कोड, नो कोड नहीं है, इट्स अ वेरी लो कोड प्रोसेस, जहां पे आपको बहुत ही कम कोड लिखा जाता है और आपका वहां पे वर्क हो जाता है। नाउ ये वर्क कैसे करता है? देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स विच आर बीन वर्किंग इन अ बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल पकड़ लो। एक्सेल में जब एनालिसिस करते हो तो आपको फंक्शन बनाना नहीं होता है, आपको कोड लिखना नहीं होता है। अगेन, कोड कब लिखते हो? जब आप वीबीए और अगर आप मैक्रोस के साथ में काम कर रहे होगे तो मैक्रो में भी बहुत ऐसे नहीं कि 100% कोड होता है, बट जब वीबीए होता है तो यस इट इज देयर एम लैंग्वेज। बट अगेन, क्या हमें उसकी जरूरत है कि एज अ डेटा एनालिटिस्ट? नहीं, वीबीए का उतना इंपैक्ट नहीं होता है। आप कह सकते हो कि ना के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूज क्या करते हैं एक्सेल में? नॉर्मली वी डू 90%, नॉट 70%, 90% ऑफ वर्क विच इज बेस्ड ऑन अवर फंक्शंस विच आर अवेलेबल। अब फंक्शंस मतलब क्या है? फंक्शंस आर ऑलरेडी प्री बिल्ड फंक्शंस और प्री बिल्ड फॉर्मूलाज विच व्हेन वी अप्लाई हमें आंसर मिल जाता है। बट इस फंक्शंस को जो यहाँ पे बनाया गया है, इसको कौन से जगह पे, कब, कहाँ, कैसे, क्या इनपुट के साथ में यूज करना है, ये है लो कोड। और इसका नॉलेज हम आपको यहाँ पे देंगे। लाइकवाइज एक्सेल है। अगेन, व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्वल, when we talk about SQL is purely coding, SQL is purely coding। तो हम आपको यहाँ पे भी करके देंगे, ऐसे कि नहीं है कि यहाँ पे नहीं करेंगे। पाइथन है, पाइथन भी पूरा कोडिंग है, ऐसे नहीं कि नहीं है। बट ये दोनों सीखने के बाद में, सीक्वल और पाइथन सीखने के बाद में आपको प्रोग्रामिंग नहीं बनाना है, आपको वेबसाइट नहीं बनाना है। ओके, सो डोंट थिंक कि भाई बहुत हार्ड जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, for SQL and for Python also, we are going to teach you how to build a website or how to build a software. We are only going to focus how to do a data analytical part in that particular language। उतना ही हमें फोकस करना है, ना उसके बाहर, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम। दैट्स वाई आपको जहां पे पाइथन सीखने के लिए शायद जहां पे 4 से 5 महीने लग जाए, वहां पे हम आपको विद इन 20 से 20 डेज में बेसिकली हमारा हो जाता है। क्यों? हमारा फोकस यहाँ पे ये नहीं है कि आपको पाइथन सिखाना है एज अ वेब डेवलपर, या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपर, या फिर आपको कोई एक पाइथन डेवलपर के हिसाब से देखना है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से जो लगता है वही सिखाएंगे और आपको वहां पे कंप्लीट कराएंगे। ओके, दैट इज आवर मोटो। इसलिए होता क्या है, सीखने में आसान होता है, आप जल्दी से ग्रास भी कर लेते हो। हाँ, उसके आगे आप बढ़ के और ज्यादा चीजें सीख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब बात करते हैं डेटा की। क्यों सीख रहे हैं हम? ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आज के टाइम पे आप देखोगे तो यही स्किल्स जरूरत है। क्यों? देखो, आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, आप किसी हेल्थ के सेक्टर कंट्रीब्यूशन, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कहीं भी जाओ आप, ओके, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल सी दैट बैंकिंग आर यूजिंग डेटा फॉर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फॉर इंटरनेशनल transferring money, everything is being big continued with data। आप टैक्स पे करने के लिए जाओ,
नेचुरल डिजास्टर के टाइम में देखो, इंश्योरेंस के टाइम में देखो, एग्रीकल्चर कहीं पे भी जाओ वहां पे भी डेटा। हेल्थ केयर में जाओ, सीआरएम, किसी कंपनी का आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट चेक करना है, उसका फीडबैक चेक करना है लोगों के साथ में, आप डेटा के, एवरीथिंग इज बीन बिल्ट अप विद डेटा नाउ। एवरीथिंग, एवरीथिंग। ग्लोबल इंपैक्ट में जाना है आपको, वेदर चेक करना है, फोरकास्ट करना है, देयर ऑल्सो इज अ डेटा ओनली। सिंपल सी बात है। आपको कोई भी पूछता है कि भाई जून में किस तरह का या फिर कौन से पर्टिकुलर टाइप का आपको सीजन मिलेगा, ओके, और आपको अगर पूछा जाता है कि आप बताओ चलो महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जून क्या है, जहां पे गर्मी खत्म हो रही होती है और वहां से बारिश स्टार्ट हो रहा होता है। नाउ ये एक आदमी को नहीं, आप 10 लोगों को पूछेंगे तो भी उनका यही ओपिनियन रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑन प्रीवियस बेस, जैसे आपको कह रहा हूं, जो प्रीवियस डेटा था, प्रीवियस डेटा जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो क्या है, वो भी एक डेटा ही है। बेस्ड ऑन दैट डेटा वी कैन से दैट जब भी जून आता है, दैट सेम पैटर्न इज बीन फॉलो, अननोइंगली ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे माइंड ने पहले से ही वो प्रेडिक्ट करना, पहले से ही वो दिमाग को, क्योंकि हमारा होता है माइंड इमेज पैटर्न पे, ओके, इमेज फोकस्ड होता है, तो इमेज के बेसिस में सब चीज उसने फोकस करके, इमेज रख के अपने दिमाग में पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है। यही चीजें हमें क्या करनी है, हमारे रियल लाइफ में अप्लाई करनी है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ओके, नाउ अब जैसे मैंने आपको कहा था, डेटा के ऊपर मैं काम करके, डेटा के ऊपर मैं सीख करके, अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो रियल लाइफ में आपने देखा होगा और आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी के लिए देख लो कि जैसे आपको पता है कि हम एक जस्ट 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 10-20 साल की बात नहीं करूंगा, जस्ट 5 साल पहले आप आपके किराने दुकान पे, फिर आसपास के कई किराने शॉप में जाते थे, क्या होता था, वहां पे एक अंकल बैठे रहते थे और आपको जो भी आपका किराना है आपने लिस्ट दिया, और अंकल क्या कहते थे, हाँ भाई छोटू ये लिस्ट है, इनका जो जो सामान है लेके आके रखिए, सामने रख दो। आज क्या होता है, आज आप खुद जाते हो